गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायाम् अथ चतुष्चत्वारिंशो अध्याय। ब्रह्मवाच संज्ञा लब्ध्वा तथा सा च मीना शैलप्रिया सती विल्लापाति संक्षुब्धा तिरस्कारमथाकरोत् तत्र तावत् स्वपुत्रांश निनिन्द सखलिता मुहुः। प्रथमं सा तथा पुत्रीं कथ्यमास दुर्वचा विनुवाच मुने पुरा त्वया प्रोक्तं वरिष्यति शिवाशिवं पश्चादिन्वता कृत्यं पूजार्थं विनिवेशितं ततो दृष्टं फलं सत्यं विपरीतमनर्थकं मुनेधमाहं दुर्वृते सर्वथा वञ्चिता त्वया पुनस्तया तपस्तप्तं दुष्करं मुनिभिश्च च यत् तस्य लब्धं फलं होतत् पश्यन्ता दुःखदायकं किं करोमि क गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहतां कुलादिकं विनिष्टं मे विहितं जीवितं मम क गतारिष्यो दिव्या शंशुनीत्रो दयामयं तपस्विनी च या पत्नी साधूता स्वयमागता यशाञ्चेवापराधेन सर्वं नष्टं ममाधुना इत्युक्त्वा वीक्ष्य च सुता मोवाच वचनं कटु किं कृतं ते सुते दुष्टे कर्म दुःखरं मम हेम दत्त्वा त्वया नीता काचो वै दुष्टया स्वयं हित्वा तु चन्दनं भूयो लेपिता कर्तमस्तव्या हंसमूढी एकाको वे गृहीतो हस्तपञ्जरे हित्वा भ्रामजलं दूरे पीतं कूपोदकं त्वया सूर्यं हित्वा तु खद्यतो गृहीतो यत्नत् सत्वया तण्डुलाशञ्चं तथा हित्वा कृतं वै भक्षणं प्रक्षिप्याजं तथा तैलं कारण्डं भुक्मादरात् सिंसेवा तथा मुक्त्वा शृगालसेवित्सत्वया ब्रह्मविद्या तथा मुक्त्वा कुगाथा च श्रुता त्वया गृहे यज्ञविभूतिं हि दूरीकृत्य सुमङ्गलां गृहीतां च चिताभस्म त्वया पुत्री हां मङ्गलं सर्वान् देववरांस्त्यक्त्वा विष्णुवादीन् परमेश्वरां कृतं त्वया तु बुद्ध्या वै शिवार्थतपीदृशं धिक्त्वां च तव बुद्धिं धिग्रूपं चरितं त्वधिकचोपदेशकर्तारं धिक्से सख्यावपि ते तथा आवां च दिक्था पुत्री यो ते जन्त्रवर्तको धिक्ते नारदबुद्धिं च सप्तरीक्ष बुद्धिदान् धिक्कुलं धिक्क्रियादाक्षं सर्वं धिग्यत्कृतं त्वया गृहं तु धूक्षितं त्वेतन्मरणं तु ममैव हि पर्वतानामयं राजा नायातु निकटे मम सप्तर्ष स्वयं नैव दर्शयन्तु मुखं मम साधितं किंच सर्वैस्तु मिलित्वा घातितं कुलं वन्ध्यायं न कथं जाता गर्भो न गलितः कथम् अथो न वामृता चाहं पुत्रिका नामृता कथं राक्षसाधे कथं नो वा भक्षिता गगने पुनः छेदयामि शिरस्तेभ्य किं करोमि कलेवरे त्यक्त्वा त्वां च कुतो यायां हा हा मे जीवितं हतम्। ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा पतिता सा च मीना भूमौ विमूर्छिता व्याकुला शोकरोक्षाढ्यर्न गता भृत्सन्निधौ हाहाकारो महानासीत्सिमन्काले मुनीश्वरा सर्वे समागतास्तत्र कर्मा तत्सन्निधौ सुरा पुरा देव मुने चाहा मागतस्तु स्वयं तदा मा दृष्ट्वा त्वं वचस्त्वां वे प्रावोच ऋषिसत्तमा नारदुवाच
यथार्थं सुन्दरं रूपं न ज्ञातं ते शिवस्य वै लीलयेदं धृतं रूपं न यथार्थं शिवेन च तस्मात् क्रोधं परित्यज्य स्वस्था भव पतिव्रते कार्यं कुरु हठं त्यक्त्वा शिवां देहि शिवाय च ब्रह्मवाच तदा कर्ण्यवचस्ते सा मेना त्वां वाक्यं ब्रवीत् उत्तिष्ठेतो गच्छ दूरं दुष्टाधमवरो भवान् इत्युक्ते तु तया देवा इन्द्रधा सकलाक्रमात् समागत्य च दिक्पाला वचनं चेदं ब्रुवन् देवाऊचु हे मेने पितृकन्ये हि श्रवन् स्वं वचनं मुदा अयं वै परमा साक्षात् शिव वा परसुखावः कृप्या च भवत्पुत्र्यास्तपोदृष्ट्वा विदुस्सहं दर्शनं दत्तवान् शम्भुर्वरं सदत्वत्सला ब्रह्मवाच अथोवाच सुरान्मीना विलप्याति मुहुर्मुहुः न देयातु मया कन्या गिरीशायोग्ररूपिणे किमर्थ तु भवन्तक्ष सर्वे देवा प्रवञ्चिता रूपमस्या परिणाम व्यर्थीकर्तुं समुद्यता इत्युक्ते च तया तत्र ऋष्य सप्त एव हि ऊचुस्ते त्वचागत्य वसिष्ठाद्या मुनीश्वर सप्तर्ष्योऽचु कार्यसाध्य यतुं प्राप्ता पितृकन्ये गिरिप्रिये विरुद्धं चात्र युक्तार्थे कथं मन्यामहे वयं ब्रह्मवाच अयं वै परमो लाभो दर्शनं शङ्करस्य यत् दानपात्रं स तु भूत्वा गत्सत्त्व च मन्दिरम् इत्युक्त्वा तैस्ततो मीना मुनिवाक्यं वृषा करोत् प्रत्युवाच दृष्टा सा तान् ऋष्यज्ञानदुर्बला निनुवाच शस्त्राघैघात् यिष्यहं न दास्य शङ्कराय तां दूरं गच्छत् सर्वे हि नागन्तव्यमन्दिके ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा विरारामाशु सा विलप्याति विह्वला हाहाकारो महाना सी तत्र तद्वृत्ततो मुने ततो हिमालयस्तत्र जगामाति समाकुला तां च बोधियुतं कृत्या प्राह तत्त्वं च दर्शयन् हिमालयवाच शृणु मेने वचो मेघ्य विकलासि कथं प्रिये के समागता गेहं कथं चैता विनिन्दसि शङ्करं त्वं न जानासि रूपं दृष्ट्वासि विह्वला विकटं तस्य शम्भोस्तु नानारूपाभिधस्य हि स शङ्करो मया ज्ञाता सर्वेषां प्रतिपालका पूजयानां पूज्य एवासो कर्ता निग्रहो हठं न कुरु मुञ्चं त्वं दुःखं प्राणप्रिये नघे उत्तिष्ठारं तथा कार्यं कतुर्महसि सुव्रते यद्वेद्वार्गता शम्भुः पुरा विकटरूपपृथक् नानालीलाञ्च कृत्वा चेतयामि च तामिमां तन्माहात्म्यं परं दृष्ट्वा कन्यां दातुं त्वया मया अङ्गीकृतं तदा देवी तत्प्रमाणं कुरु प्रिये ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा सोऽद्रिनाथो हि विरराम ततो मुने तदा कर्ण्य शिवा माता मेनोवाच हिमालयं मेनुवाच मध्वचा श्रूयतां नाथ तथा कर्तुत्वहर्महसि गृहीत्वा तनूजां चैनां बद्ध्वा कण्ठे तु पार्वतीम् अधापात्य निशङ्कय दास्यत्वं न हराय हि तथैनां त्वानाथ गत्वा वे सागरे सुतां निमज्य त्यक्त्वा ततोदृश सुखी भव यदि दास्यसि पुत्रीं त्वं रुद्राय विकात्मने तर्हि तयक्ष्याम्यहं स्वामिन् क्षीणकलेवरं ब्रह्मवाच इत्युक्ते च तदा तत्र वचने मेन्या हठात् उवाच वचनं रम्यं
पार्वती यमागता पार्वतीवाच मातस्ते विपरीता हि बुद्धिजाता शुभावः धर्मावलम्बनातं हि कथं धर्म जहासि वै अयं रुद्रोपर साक्षात् सर्वप्रभव ईश्वरा शम्भुस्वरूप सुखदा सर्वश्रुतिषु वर्णिता महेशा शङ्करस्याय सर्वदेव प्रभुस्वराट् नानारूपाभितो मार्तर्हरिब्रह्मादिसेविता अधिष्ठानं च सर्वेषां कर्ता च स प्रभु निर्विकारी देवेशो हा विनाशी सनातना यदर्थे देवता सर्वा आयता किङ्करीकृता द्वारिते सोतस्वाशाध्या किन्मितोऽन्यत्परं सुखम् उत्तिष्ठाथ प्रयत्नेन जीवितं सफलं कुरु देहि मा त्वं शिवायास्मे स्वयक्षं कुरु सार्थकं देहि मा परमेशाय शङ्कराय जनन्यः स्वीकुरु त्वमिमं मातर्विण्यं मे प्रवीणीते चेन दायसि तस्मै मा न वृणेयम् अहं वरं भागं लभेत् कथं सेऽहं शृगालपर्वञ्चका मनसा वत्सा माता कर्मणा च हर स्वयं मया वृतो वृतक्षेव यदिच्छसि तथा कुरु ब्रह्मवाच इत्याकर्ण्य शिवावाक्यं मीनाशैलक्षरप्रिया सुविलप्य महाक्रुद्रा गृहीत्वा तत्कल्लेवरं मुष्टिभिः कपूरुक्षेव दन्ते दर्शयति च सा ताडयामास त्वां पुत्री विप्रलाति वृषान्विता ये तत्र ऋष्यस्तात त्वधाद्याक्षा परे मुने तदस्तातां परिच्छिद्य निन्युदुरु तरं तथा तानवे तथा विद्यान् दृष्ट्वा भर्तस्य त्वा पुनः पुनः उवाच श्रावयन्ती सा दुर्वचो निखिलान् पुनः मीनवाच किमेनाहि करिष्यम् दुष्टाग्रहवतीं शिवां दास्यामस्यस्य गरं तीव्रं कूपे क्षेप्यामि वा ध्रुवं चेतस्यामि कालीं मित्वा शस्त्रास्त्रे भूरि खण्डशा निमज्जयिष्य वा सिंहो स्वसुतां पार्वतीं खलु अथवा स्वशरीरं हि त्यक्षायां याक्ष्यन् यथा ध्रुवं नादस्य शम्भवे कन्या दुर्गा विकटरूपिणे वरोऽयं कीदृशो भीमो अन्या लब्धः दुष्टया कारितोषोपहासो मे गिरीक्षापि कुलस्य हि न माता न पिता भ्राता न बन्धुगोत्रजोऽपि हि नो स्वरूपं न चातुर्यं न गृहं वास्य किञ्चन न वस्त्रं नापयलङ्कारा सहाया केऽपि तस्य न वाहनं न शुभं हास्य न वयो न धनं तथा न पवित्रं न विद्या च कीदृशकाय आतिर्द किं विलोक्य मया पुत्री देयास्मे स्वयात् सुमङ्गला ब्रह्मवाच इत्यादि सुविलप्याथ बहुशो मेनका तदा रुद्रोचैर्मुने साहि दुःखशोकपरिप्लुता अथाहं द्रुतमागत्या कथयं मेनकां च तां शिवतत्त्वं च परं ज्ञानहरमुत्तमं श्रोतव्यं प्रीतितो मेने मध्येयं वचनं शुभं यस्य शृण्वता प्रीत्या कुबुद्धिस्ते विनश्यति शङ्करो जगता कर्ता धर्ता हर्ता तथैव च न त्वं जानासि तद्रूपं कथं दुःखं समीहसे अनेकरूपनामा च नानालीलाकरा प्रभु सर्वस्वामी स्वतन्त्रक्ष मायाधीशो विकल्पक इति विज्ञाय मेने त्वं शिवां देहि शिवाय वै कुहट्टं त्यज्य कुज्ञानं सर्वकार्यविनाशनम् इत्युक्त्वा सा मया मेना विल्पन्ति मुहुर्मुहुः लजां किञ्च छिनस्तत् त्यक्त्वा मुने मा वाक्यं
ब्रवीत् मेनोवाच किमर्थं तु भवान् ब्रह्मान् रूपमस्य महावरं व्यर्थाकी करोति किमयं हन्यतां न स्वयं शिवा न भक्त्यं च भवता शिवाय प्रतिदीयतां न दास्यहं शिवायेन स्वसुतां प्राणवल्लभां ब्रह्मवाच इत्युक्ते तु तदा सिद्ध्वा सनकाद्या महामुने समागत्य महाप्रीत्या वचनं हीदं ब्रुवन् सिदाऊचु अयं वै परं साक्षात् शिव परशुभावः कृपया च भवत्पुत्रे दर्शनं दत्तवान् प्रभु ब्रह्मवाच अथोवाच तु तामेना विलप्य च मुहुर्मुहुः न देयातु मया सम्पद्गिरीशा योगरूपिणे किमर्थं तु भवन्तक्ष सर्वे सिद्ध्वा प्रपञ्चिना रूपमस्य परं नाम व्यर्थीकर्तुं समुद्यता इत्युक्ते च तया तत्र मुनेऽहं चकितो भवम् सर्वे विस्मयमापन्ना देवसिद्धर्षि मानवा एतस्मिन्स्मये हठं श्रुत्वा दृढं महत् धृतं शिवप्रियो विष्णु समागत्याब्रवीदिदं विष्णुर्वाच पितृना च प्रिया पुत्री मानसी गुणसंयुता पत्नी हिमवत् साक्षाद् ब्राह्मणं कुलमुत्तमं सहायास्तात् त्रिशालोके धन्यासि वदामि किं धर्मस्याधारभूतासि कथं धर्मजहासि देवैक्ष ऋषिभिश्चैव ब्राह्मणा वा मया तथा विरुद्धं कथ्यते किं नु त्वयैव सुविचार्यतां शिवं त्वं न जानासि निर्गुणं सगुणं स हि रूप स सुरूपो हि सर्वसेव्य सतां गति तेनैव निर्मिता देवी मूलप्रकृतिरीश्वरी तत्पाक्षे च तदा तेन निर्मिता पुरुषोत्तमा ताभ्यां चाहं तथा ब्रह्मा ततक्ष गुणरूपता अवतीर्य स्वयं रुद्रो लोकानां हितकारका ततो वेदास्तथा देवी यति किञ्चित् दृश्यते जगत् स्थावरं जग्गम चैव तत्सर्वं शङ्कराद्भुत तद्रूपं वर्णितं केन ज्ञायते केन वा पुनः मया च ब्राह्मणा यस्य हातो लब्धदक्षिणैव हि आब्रह्मास्तपर्यन्तं यति किञ्चित् दृश्यते जगत् तत्सर्व च शिवं विद्धि नात्र कार्यविचारणा स अवेदरूप सूर्यरूपेणावतीर्णो निज लीलया शिवा तपा प्रभावाधित्वद्वारी समागता तस्मात् त्वं हिमवत्पत्नी दुःखं मुञ्च शिवं भज भविष्यति महानन्दकलेशो यास्यति संशयं ब्रह्मवाच एवं प्रबोधितायास्तु मेनकाया अभून्मुने तस्यास्तु कोमलं किञ्चन मनो विष्णु प्रबोधितम् परं हठं न तत्याज कन्यां दातुं हराय न स्वीचकार तदा मेन शिवमाया विमोहिता उवाच च हरिमेन किञ्चित् बुधा गिरिप्रिया श्रुत्वा विष्णुवचो रम्य गिरिरक्षा जननी हि सा यदि रम्यतनु स तदा देया मया सुता नान्यथा कोटिशो यत्नेर्वच्च मे सत्यं दृढं वचा इत्युक्त्वा वचनं मेना तूषणीमास्त्रिव्रता शिवेच्छा प्रेरिता धन्या तथा शाखाखिलमोहिनी इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे मेनाप्रबोधवर्णनं नाम 440 अध्याय।